Good afternoon, all of you. G.S. College of Sir, Commerce and Economics, Jabalpur, is continuously organizing the National Research Workshop since last few years. In this year, we are again conducting a 7 days national workshop on research methodology and data analysis. And the today's topic of technical session is data collection and visualization. I welcome all of you. On behalf of the GS College and PhD Research Center, I welcome Dr. Sangeeta Pawar, Madam, Professor, Department of Commerce, University of Mumbai. She is the keynote speaker of today's technical session. On behalf of the GS College, I welcome you, sir. Welcome, Madam. Honorable Principal, Dr. Kumar Pavasar has already joined us. The convener of this national workshop, Dr. Sunil Pandey, sir, and all the participants. We are going to start this technical session on the topic data collection and visualization. Without wasting time, I directly invite Mr. Pratik Bhatia to introduce the today's technical expert, subject expert, Dr. Sangeeta Pawar, Madam. Over to Pratik Bhatia, sir. Pratik, sir. Deshpande, sir. Hello. आशीष जी यू मे कंटिन्यू विद इट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है देखो ऊपर thank you, Ashish sir. Am I Okay, audible? Pratik. Yes, you are audible, and I request you to please introduce Honorable Dr. Sangeeta Pawar, Madam. Thank you, sir. First of all, I would like to welcome Dr. Sunil Kumar Pavasar, Principal G.S. College, all the participants. I would like to welcome Dr. Sangeeta N. Par ma'am on behalf of our college. I would like to give introduction of her. She is professor and elected Senate member, Department of Commerce, University of Mumbai. She has pursued M.Com, LLB, she has pursued PhD, Diploma in Communication Technology. She is BOS member in Commerce, University of Mumbai. She is BOS member in HR of Pune University. She is also elected Grievance Committee member for teaching staff of University of Mumbai. She has been elected for 5 years as Senate member from postgraduate constituency. She has 26 years of delegate career in teaching profession. She is specialized in business management subjects like HRM, organization behavior, strategic management, marketing, entrepreneurship management, etc. She is a research guide in commerce and management also. She has received several awards for academic and social works. Most prominent, she has got Savitri Bai Phule Adarsh Shiksha Award of University of Mumbai. She has 60 publications in peer-reviewed journals, more than 100 talks, speech, and deliberations on academic and social forms, 47 theses, external examiners, and viva and open defense of PhD of the students of North, South, East, West region of university in India. She has 15 years she's been elected as General Secretary of University Teachers Union. In 2012 to 2015, she was the member of Maharashtra government project by Mantralaya in digitization of course curriculum, learning methodologies, system, etc. Member of many administrative committees in University of Mumbai.
She is the resource person in 54 online webinars, talks, deliberations, research workshops from 2020 to 2021 and till date. I would like to welcome Dr. Sangeeta Pawar ma'am. So I request Dr. Sunil Kumar Pavasar to kindly have a talk to Sangeeta Pawar ma'am. Very good afternoon to one and all. May I check my audibility? Am I audible clearly? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Thank you very much. So, very good afternoon once again. Govindram Sexaria Arth Vanijya College, Jabalpur, organizing a 5-day national workshop on research methodology, and calling me, inviting me as one of the resource person is my privilege. I'm extremely thankful for that. And on the onset, I will thank the principal of the college, Dr. Sunil Kumar Pavasar, convener of this national workshop, Dr. Sunil Deshpande sir, all the fraternity organizing team teachers and all the participants. A very, very warm greetings from my side. And definitely this kind of workshop, though we are virtually connected, is going to allow us to nurture good research across the boundaries of India, and definitely will allow us to be more globalized when it really comes to research. So with these few words, I move on to begin with my lecture, because I picked up a topic which is all related to data collection and visualization. So I have very crux format of the PPTs, which will be just flashing some bullet pointers. But I would wish to really elaborate on each and every element of it, because when it comes to research, I believe that researcher needs to be more clear with what they do generally. I mean, it's not something like you all of a sudden decide to go for a doctoral program, or you pick up something from whatever comes in the way of your reading, and from there on your research begin. That's not exactly the way it has to be. Therefore, I personally believe that any research activity or any kind of such workshop should primarily focus more on how exactly to begin with the topic selection, or rightly from the way of how the theme of a particular research has to move on. तो जैसे सर ने मुझे बताया है, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करूंगी, अपने भाषा शैली से आपको अपने विचार प्रकट करूंगी. जब भी किसी को कोई अगर समझ में ना आए तो आप चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, जो कि एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो विल ट्राई टू सॉल्व दैट. तो मे आई नाउ रिक्वेस्ट नेहा पांडे मैडम टू प्लीज बिगिन विद आवर पीपीटीज, इफ शी कैन start with the PPT. Yes, ma'am. Some problem is there? Yes. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. नहीं हो रहा है मैडम? हो रहा है, कोशिश हो रही है मैडम.
I think meanwhile when the PPT presentations will open up, I can go on. Ma'am, now is it visible? हाँ जी sir. And we start. Just a minute. वो किस सिस्टम से किया? Yeah. So we will begin now. As it is, I have already mentioned that I'll be speaking more on the data collection aspects in line with how we visualize a particular topic or the theme of a particular research work. So let's move on. Madam, हम second वाला लेंगे slide. Begins with his work. So it is all about the selection of a topic or a theme for a research work. Now how generally it begins? Generally जब भी हम कोई research की problem पे हमको कोई काम करना होता है, आप कोई एक वर्किंग पेपर ले लो या फिर कोई सेमिनार के लिए आपको पेपर बनाना है या फिर आपको कोई कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी चीज को जहाँ कहीं में हमने पढ़ा होगा या कहीं बुक में हमने पढ़ा होगा, हमारे कई डिस्कशन में किसी के साथ आया होगा, या कोई सेमिनार हमने अटेंड किया है जब उस थीम पे कोई बातचीत हो रही है या इनपुट शेयर हो रहा है, तो उस चीज के बारे में हम सोचने लगते हैं, हम बात करने लगते हैं और फिर उसी को लेके हम अपना रिसर्च शुरू करते हैं. यानी हम एक पेपर बना लेते हैं, कहीं से हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं. तो जनरली व्हाट हैपेंस इज लाइक we start preparing for a research by way of getting information or trying to seek information from some sources. Okay, so this source either can be a source that has come before you by some reading or by interactions with the people or by trying to get some inputs by friends or experts or mentors and so on. Now this is the way in which the things begin it. बट फॉर डॉक्टरल वर्क, जब हमको डॉक्टरल वर्क करनी पड़ती है, पीएचडी करना होता है, तब जनरली हम कैसे करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं. एम आई राइट? जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज में हो तो आपकी सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी और इंटरडिसिप्लिनरी टच में है, सोशोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी टच में है, यानी दो विषयों का मिलाप जहाँ है, ठीक है, यानी सोशोलॉजी कॉमर्स ले लो आप, सोशोलॉजी मैनेजमेंट ले लो आप, साइकोलॉजी मैनेजमेंट ले लो आप, या प्योर कॉमर्स में जब हम जाएंगे तो अकाउंट्स लीजिए आप या फिर बैंकिंग लीजिए आप. तो ये जो विषय होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका आईना है रिसर्च का, ठीक है. तो विद द सब्जेक्ट यू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू डू फॉर रिसर्च, राइट. सो हर किसी का रिसर्च पहले तो अपने सब्जेक्ट से आता है, जिस फील्ड से आप हो, जिस डोमेन नॉलेज को आप बिलोंग करते हो, जिस डिग्री आप जिस विषय में आपने डिग्री ली है, तो आपका वो प्रमुख एरिया बन जाता है, विशेष एरिया बन जाता है और उसमें से आपका रिसर्च की शुरुआत होती है, राइट. सो द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी रिसर्च वर्क एंड फ्रॉम देयर ऑन we start searching for what should be the probable area for selection of the topic or the theme or the title of your research. Am I getting you? तो जैसे आप HR में हो तो आप तकरीबन HR के सारे सिलेबस को देख लेंगे, आप देखेंगे कि HR में कहाँ स्कोप है रिसर्च करने के लिए, ठीक है. तो जैसे अभी अब काफी लोग कोविड-19 सिचुएशन के बाद पेंडेमिक को लेके सेक्टर्स में क्या दुर्दशा हो रही है, जैसे आप एनवायरनमेंट ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप इंडस्ट्री ले लो, आप बिजनेस ले लो, तो हम जोड़ लेते हैं, राइट. अपने विषय को किसी प्रॉब्लम के साथ जोड़ के हम उसके कैनवस को बड़ा कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है. तो हर किसी को जब भी कोई शुरुआत करनी होती है रिसर्च की, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए आपका सब्जेक्ट मेन होना चाहिए, जिस डोमेन से आप बिलोंग करते हैं. उस सब्जेक्ट में आपको दूसरी चीज देखनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट में स्कोप है रिसर्च करने के लिए या नहीं, ठीक है. तो आप अगर कोई कॉन्सेप्ट को लेके रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस पर वर्किंग पेपर बना सकते हो, आप सेमिनार पेपर बना सकते हो, लेकिन आप उसको डॉक्टरल वर्क नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप ड्रॉ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, किसी और की इंफॉर्मेशन को आप यूज करके उसका पेपर बना रहे हैं. लेकिन डॉक्टरल काम में हम चाहते हैं कि स्टूडेंट, जो पीएचडी स्टूडेंट होता है, वो किसी और के काम को कैसे एक्सटेंड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, किसी और के सोच को अलग कैसे बता रहा है, ठीक है.
तो इसीलिए हम उसको एनालिटिकल बोल सकते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, हम एम्पिरिकल बोल सकते हैं। तो किस दिशा में आप रिसर्च ले जा रहे हो उसके बारे में पहले जानकारी रखना, ये रिसर्च प्रॉब्लम की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, कई बार लोग टाइटल को इतना महत्व नहीं देते, फिर जैसे ही काम शुरू होता है तब उनको रियलाइज होता है कि भाई कहीं तो मेरे से गलती हो गई है टाइटल सिलेक्शन में। तो हमेशा ध्यान रखिए, टाइटल सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके टॉपिक में गड़बड़ी हो रही है शुरुआत में ही, तो आपके रिसर्च में बाकी चीज़ों में डेफिनेटली गड़बड़ हो सकती है। तो रिसर्च प्रॉब्लम पे जोर देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं, आपके आगे के स्लाइड्स में हम मॉडल और मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते जाएंगे, पर पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम के एलिमेंट को थोड़ा डिटेल में टच करेंगे। तो नेहा मैडम, आप थर्ड वाली स्लाइड डालेंगे। हाँ, तो अब कैसे किया जाता है रिसर्च? हाउ डू वी जनरली गो विथ हैंडलिंग योर टॉपिक्स और हैंडलिंग योर रिसर्च एरिया और हैंडलिंग the theme of a research work? First is nothing but formulation of research problem. How do you do it? You gather ideas, right? You stimulate ideas, you discuss, you observe. Okay, like say for example, COVID-19 में हालांकि अभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो हमेशा से हर महीने में 2-3 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का कुछ ना कुछ वर्कशॉप या सेमिनार्स होता है। तो हम जब अटेंड करते हैं तो हर किसी के अलग अलग नजरिए को हम समझते हैं, सबके प्रोसेस ऑफ आइडिएशन अलग होते हैं, बिकॉज हम इंडिविजुअल अलग हैं। ठीक है, तो कोई और कोविड-19 को अपॉर्चुनिटी भी बोल सकता है, विन विन रेशियो में लेता है, कोई कोविड-19 को डिजास्टर करके ले रहा है। डिजास्टर डेफिनेटली वो डिजास्टर ही है, ये हजार्ड ही है वो हेल्थ का, लेकिन उस पेंडेमिक में से हम अपनी सोच कैसे पॉजिटिव रखें, हम उसको जो है, जो माहौल चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, जो सिचुएशन चल रहा है, उसमें से अपने आप को कैसे बैलेंस करें। तो जैसे कि फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें जो हमको बोलते हैं कि मेंटली आपको कैसे बैलेंस रखना होगा, स्ट्रेस को कैसे कम करना होगा, तो ये सारी चीज़ों का आइडिएशन हम करने लगते हैं, राइट? अपने सोच के दायरे को हम बड़ा करते हैं। तो क्या ये सब कॉमर्स में भी बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है, बिकॉज यूजीसी ने आज आपके रिसर्च को इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया, मल्टी डिसिप्लिन भी कर दिया। ठीक है, तो हम उसको एक कंपार्टमेंट में नहीं बांध के रखेंगे, हम उसको बहुत बड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम आइडियाज को स्टिमुलेट करें। हमने आइडिया तो गैदर कर ली, पर उसको स्टिमुलेट करना होता है। तो स्टिमुलेशन के लिए जितना हो सके आपको डिस्कस करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको लोगों से इंटरैक्ट करना होगा, ये सोच के कि जो सोच मेरी है वो सामने वाला उसी को वैसे ही लेता है, उसको वैसे ही समझता है, या इज देयर अ वे इन विच द रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड बाय द अदर पर्सन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, सो these things are important where while deciding on a research topic for doctoral research work, PhD programs, and this definitely helps in the very initial period, शुरुआत के पीरियड में बहुत बेनिफिट करता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तब आपको रिसर्च की गहराई समझती है। गहराई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिसर्च। ओके, तो मैग्नीट्यूड में जनरली हम क्या देखते हैं कि इज दैट योर रिसर्च हैव दैट पेनिट्रेशन वैल्यू, हाउ डीप इट इज गोइंग टू गो। ओके, सो फेस वैल्यू पे आप ब्रश नहीं करेंगे आपके रिसर्च को। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 सिचुएशन लिया, आपने खाली बताया कि भाई सेक्टर्स में बर्बादी हो रही है, काफी सेक्टर्स में ये हालत हो गई, लेकिन उसको कंक्लूजन पे लाने के लिए आपके पास कोई ठोस उपाय भी तो होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है व्हेन यू गो डीप, what are the probable solutions that you're going to give out of the problem that has come through the particular theme or the problem area. So that is the penetration level, and the scope should be generalized, studied, known right from the beginning of your research. Scope सबसे पहले टाइटल सिलेक्शन के बाद ही आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी स्कोप का मतलब है कि आपके रिसर्च का एक्सपेंशन कितना है। span, expansion, these two things should be considered. Like say रिसर्च में हम हमेशा देखते हैं कि पीरियड ऑफ स्टडी स्कॉलर ने कितना लिया है। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि भाई डिमोनेटाइजेशन का मैंने सिर्फ 9 महीने का स्टडी किया है, या फिर पेंडेमिक का मैंने खाली 22 महीने का स्टडी किया है, तो वो एक छोटी पीरियड हो गई। उस टाइम पे जो सिचुएशंस आई उसको आप स्टडी करें। स्पैन जितना बढ़ेगा, पीरियड जितना बढ़ेगा, आपको ज्यादा स्कोप मिलता है डिफरेंट कंक्लूजन्स लाने के लिए, डिफरेंट इश्यूज को टैकल करने के लिए। So it is expected that the scope analysis of the research should be very well understood by a researcher from the beginning itself,
so that to understand how much period will I take for my study and how is this going to help. Like say economics field के जो लोग research करते हैं उनका data हमेशा big होता है, empirical होता है, correlation based होता है, because उनको 20-20 साल का data एक साथ correlate करना होता है, right? तो बैंक related data हो, inflation related data हो, poverty related हो, population related हो, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज में ये एक ही साल का population ratio निकाल रहा है, उसको 10, 20, 30 साल का population ratio निकालना पड़ता है. Am I getting you? So scope of research is something that somebody needs to know, a research scholar needs to know before beginning into the aspect of research work. Now coming to subject, जैसे मैंने बोला subject knowledge बहुत जरूरी होता है. तो subject में हम क्या देखते हैं? Depth of the subject. कौन से subject में कितना depth है और वो आपकी comfort zone में होना चाहिए. ठीक है, तो आपका कंफर्ट जोन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में आप देखोगे कि सब्जेक्ट डेप्थ कितना है. आप ऐसे बनाओगे कि आपका रिसर्च टॉपिक से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी, व्हाट इज दैट? It is simply some information that you're going to give about that company and their financial standing, right? But if you work on exactly the issues related to working capital management, the different type of ratios that are being leveraged to solve the problems of working capital, or the issues of debt increase, that is for example loans and all, like, so there the financial management topic will have better subject depth, and from there onwards you can start with understanding how it should be applied to the businesses. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस आप लो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लो, MSMEs ले लो, आप बड़ी कंपनियां ले लो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स ले लो, तो इसमें ये कैसे लगे, सब्जेक्ट उठा के वो अप्लाई कैसे होगा, एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होगा, ये आपको देखना होता है, जिसके लिए सपोर्टिव लिटरेचर की बहुत जरूरत होती है, और दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. इज दैट समबडी हु इज ऑलरेडी डन रिसर्च ऑन दैट? प्लीज check on that, collect the information, always keep your research or review of research very big, at least more than 100 to 200 reviews a person should go through with before coming to selection of a topic. Okay, madam, can we go for the next slide? Yeah, so this is all I said in the beginning कि आप क्या पढ़ रहे हो, what do you read, it matters. अगर आप कोई लोकल किताब उठा रहे हो और उसमें से अगर पढ़ने लगोगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज को इतना ज़्यादा कनेक्टिव इनपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उसको एनालिटिकली जानने के लिए आपको हर वो चीज़ वो सब्जेक्ट में आती है उसके बारे में पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल से इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड यू आर रीडिंग सम बुक विच इज़ फॉर द स्कूल लेवल, कोई NCERT का बुक लिया या फिर कोई हिस्टोरिकल बेस्ड बुक लिया, तो उसमें से आप जानकारी तो हासिल कर रहे हो, यू आर गेटिंग सम इनपुट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, बट दैट इनपुट इज एट अ वेरी माइनर लेवल. So the minute you move on with your data collections for the higher studies, you have to go for better reference books. ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस वैल्यू जो आप करेंगे, रीडिंग करेंगे आप, जर्नल्स है, बुलेटिन्स है, मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट का डेटा होता है, ये सारी चीज़ जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो उसमें से आपका एनालिटिकल रीडिंग बढ़ेगा. हर एक पैसेज के पीछे आप सोचने लगोगे कि ऐसा क्यों है या फिर इसको हम अगर अलग क्यों नहीं कर सकते. तो वो थिंकिंग लेवल बढ़ानी होती है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ हाउ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग इज पॉसिबल? कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज हैव अ प्रोसेस. प्लीज रिमेंबर दिस. हर किसी के थिंकिंग में थिंकिंग का एक मॉडल होता है, और थिंकिंग के मॉडल में सबसे पहला चीज जो आता है वो कॉग्निटिव एलिमेंट है. ओके, तो कॉग्निटिव एलिमेंट मतलब अपनी सोच हो गई, और उसको प्रोसेस करने के लिए आपको 4 चीजों का जरूरत पड़ता है. एक मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, दिस इज नॉट नेगेटिव. मैनिपुलेशन इन द सेंस किसी और ने कुछ बोला है उसको ऐसे ही नहीं लेंगे हम, उस डेटा को हम 2-3 बार सोचेंगे कि ये सच में ऐसा है या कुछ और भी हो सकता है. Okay, so when you start manipulating that data, manipulation of the information, you have a reasoning for it. You give a reason for it. Okay, and with a reason, obviously the reason becomes logical, it becomes rational, and it becomes realistic. I hope you are getting me. Logical in the sense आप interpret करते समय डेटा जो जैसा है वैसे ही ले रहे हैं और उसको अलग दिशा में सोचने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल when you enter a half door open is like full door open. आधा दरवाजा जो खुला है, जो फुल भी खुला है,
क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट होता है एंट्री एग्जिट का, आधे में से भी आप आ सकते हो, फुल दरवाजे खुलने में से भी आते, तो उसको लॉजिक बोलते हैं। आप उसको जस्टिफिकेशन देते समय उसको डिफेंड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा खोलो तभी हम इंटर एग्जिट कर सकते, दोनों तरफ से वो सही है। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक। ओके, अब रैशनैलिटी क्या होता है? रैशनैलिटी ये चीज होती है जब जिसके पीछे आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से स्ट्रांग हो, स्टडी का बैकग्राउंड पूरी तरह से स्ट्रांग हो, आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए हैं और उस बुक में से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, उसकी एप्लीकेशन रिलेटेड क्लैरिटी भी है, और बेस्ड ऑन दैट यू आर रेडी टू गिव योर रैशनल suggestion. Okay, so rationality will be sensitive by nature. Rationality will be very pure, very fundamental, and based on the observation. Like for example, can somebody say that farmers' suicide in India is a good thing? No, because somebody is going to die because of some situations, because of some problem. So it is sentimental. Therefore, every human being who is a part of the earth will definitely take it as a very heart touching, sensitive element, and they will have a rationality towards it. ओके, और रियलिस्टिक वो चीज होती है जो आपको सामने दिख रही है, जैसा है वैसे उसको सामने आप इंटरप्रेट कर रहे हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स. सो द मोरालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग एथिकली through the fabric of understanding the good and bad things is the realistic approach that each one of us need to have, and these things are possible only through proper evidence search. ये आगे आगे जाके मैं बताऊंगी क्या है ये सब, बिकॉज एविडेंस सर्च में क्या होता है, जो चीज ऑथेंटिक है वही आपको पढ़नी है. क्या आप सोशल मीडिया के हर चीज को सही मान के चले गए? नहीं. Any information comes on the WhatsApp or comes on Twitter or comes on Facebook, we cannot call it as very authentic, accurate information, because though it is an information, but the evidence may not be the direct evidence. Therefore, evidence search is very, very, very essential. And the information that you're collecting also needs to be cross-analyzed. Now, how that is supposed to be done, we'll see in the next slide. Madam, next slide, please. ओके, तो ये जो चीज अभी मैंने बताई है ये प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज हो गई. जैसे अभी माइक्रो एनालिसिस तो हमने इन सब चीजों का कर लिया, जो छोटी छोटी बातें अभी मैंने बताई, रैशनैलिटी क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए, तो ये थिंकिंग से जुड़ा होता है माइक्रो एनालिसिस. और मैक्रो लेवल जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से जुड़ा रहता है, जो बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कुछ चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस चीज का इन्फ्लुएंसेस निकाल के उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो मैक्रो लेवल पे जाता है. उसका जो डेप्थ है वो मैक्सिमम लेवल पर एक्सपैंड होता है, और हम उसको क्रॉस चेक करना चालू करते हैं, क्रॉस एनालिसिस. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अ फ्रेंड इज टेलिंग यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, definitely you will check it out with the third person, with the fourth person, and check out whether ये सच में रियल है कि नहीं, है ना. लाइक फॉर एग्जांपल, अब आपके पास कोई कॉलेज ने नोटिस नहीं डाला है कि कल छुट्टी है, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे मिल गया, तो आप उसको आसानी से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप पूछेंगे 10 लोग कि ये सच में ये है कि नहीं, है राइट. सो एनालिटिकल मैक्रो पार्ट goes through proper discussions, checking the information, the trend analysis with the flow of informations, and contemporary relevance उसका रखना बहुत जरूरी होता है. contemporary relevance मतलब आज की स्थिति में वो सच में applicable है या नहीं, सच में resolution based है या नहीं, या सच में उसके पीछे आपको स्कोप एनालिसिस मिलेगा कि नहीं रिसर्च करने के लिए, ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस रखना बहुत जरूरी है. लाइक फॉर एग्जांपल, the key industries of India, when you look at those key industries, definitely they are Navratnas, right? And each one of them have specific contribution to the economic development, right? So we are all concerned about the India's economy strengthening because of these sectors. And every common layman will definitely feel that this sector is giving revenues to the government, creates more employment, it looks after the labor forces, it looks after the global forces, and therefore the contemporary relevance says that these sectors are the prime sectors for the economy and it really sustains well, right? So it talks about sustainability. तो ये कहाँ से मिल रहा है आपको? ये जानकारी आपको प्रॉपर डोमेन से मिल रही है, जो मिनिस्ट्री डेटा हो सकता है, ऑथेंटिक है वो, जो डेटा आपके सामने पड़ा है, स्टैटिस्टिक्स सामने पड़ी है, आरबीआई बुलेटिन का कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें रेपो रेट के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके रेलेवेंस के रिलेटेड है.
आज के सिचुएशन में कैसे रेलेवेंट है, खाली आपको वो चेक करना होता है, ठीक है। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन मैडम। या सो नाउ हाउ डू वी डू दिस, वी हैव सम सोर्सेज थ्रू व्हिच वी हैव टू डू। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि सोर्सेज के रेजोल्यूशन को समझना इम्पोर्टेंट होता है। पहले तो आपको देखना होता है कि क्या आप फॉर्मल सेट में उसको इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं या नहीं, राइट। तो वो एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि एस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन मतलब कि किसी और ने पीएचडी कर रखी है उस टॉपिक में, तो आप उसको देख लीजिए। आपके इन्फ्लिबनेट का जो नॉलेज रिपोजिटरी है, जिसको शोध गंगा बोलते हैं, उसमें सारे स्टेट्स के रिसर्च पीएचडी थीसिस अपलोडेड हैं। हम उसके उनको देखते हैं, हम उसमें से देखते हैं कि भाई किसी XYZ ने क्या काम कर रखा है, तो उन चीज़ों को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ों का हम थोड़ा रेलेवेंस बढ़ाने के लिए एनसाइक्लोपीडिया होता है, तो एनसाइक्लोपीडिया रिसर्च बेस्ड होता है। किसी भी टॉपिक को लेके, मार्केटिंग हो सकता है, HR हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ के सोशोलॉजिकल क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो उसको हम लेते हैं थोड़ा स्टडी में। फिर हम रेफरेंस बुक्स रखते हैं जो कि आपके इंडियन नेशनल बेस्ड होने चाहिए, इंटरनेशनल बेस्ड होने चाहिए। तो अच्छे ऑथर्स के बुक्स हम रेफर करते हैं। आजकल ई बुक्स आपको अवेलेबल है, ई जर्नल्स आपको अवेलेबल है, तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल शुरू करना करते हैं। देन वी हैव इमर्जिंग सोर्सेज लाइक इंटरनेशनल सोर्सेज, मोनोग्राफ्स एंड ऑल। लाइक these are short synoptical informations, they are not very wide detailed one. In case if you want to get more information, then you have to seek permissions from the international authors, because foreign countries में प्लेजरिज्म जो बोलते हैं, किसी और के काम को कॉपी करना या डिसऑनेस्टी करना, इसके रूल्स और कायदे बहुत रिजिड हैं। देयर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, राइट। So in case if you have to get a detailed paper from somebody from an international source, you have to seek permission. So you have to write to the publisher, you have to write to the author and get a permission from them. If they allow you, then definitely you can pick up their informations and use it in your research work and so on. So emerging sources में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी किसी की चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे। Then you have tested verified topics that I already mentioned कि लिस्ट ऑफ रिसर्च डन इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप मुझे जान रहे हैं, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, आप डालेंगे प्रोफेसर संगीता पवार, या रिसर्च गेट पे आप जाएंगे, मेरा नाम डालेंगे, तो आपको मेरे नाम के साथ मेरे बायोडाटा में मैंने कौन सी चीज़ पे काम किया है, कौन से पेपर्स है, तो वो उसके पेपर्स अपलोडेड होते हैं। कई बार आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि मैडम आप फुल पेपर हमको देंगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप परमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां आप रिप्यूटेड और कई भारत के सारे विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय हैं, सभी के प्रोफेसर्स का इंफॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, और उनको सर्च करेंगे तो भी आपका काम हो जाता है कि आपको काफ़ी कुछ अच्छा प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सकता है। तो अपने ही देश के टीचर्स को आपको बढ़ाना होगा अच्छे काम के लिए, तो उनका सोर्स यूज करना is one of the good idea that our scholars should do it instead of quoting all the time international works and so on. So this gives a lot of potential help for the experts also to keep on doing good work, good research work and so on. Then as I already mentioned, discussion research scholars आपके कलीग के साथ आप हमेशा करिए, आपके दोस्तों के साथ आप हमेशा करिए। आइडिएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अपनी सोच बढ़ती है, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बढ़ता है, and this helps us to be more clear with the data collection. So this is basically the visualization process of how you go with, you know, understanding the research work and so on. Madam, next slide please. Yeah. So what are the features for a good research work? Let's very quickly glance at it. So first is the basic question that should come to your mind is whether your research is going to be application based or not. अब इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए आप, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कॉमर्स मैनेजमेंट के एरिया में आजकल के दौर में एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे हर रिसर्चर अपने रिसर्च के थीसिस में लिखता है कि मेरा काम डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी है, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई ये मेरा टाइप ऑफ रिसर्च है, मेरा काम डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी का मतलब हो गया
मैंने 50% सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया है और 50% प्राइमरी डेटा, ठीक है। कई बार आप बोलते हो कि 500 रिस्पोंडेंट्स का डेटा कलेक्शन में आ गया है और इस तरह से वो डेटा इंटरप्रेट होकर एप्लीकेशन बेस्ड होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलत बात ये हो जाती है कि टाइप ऑफ रिसर्च में काफी स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपके रिसर्च में आपका रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी तो होता ही है, बिकॉज आपने कहीं से डेटा इंफॉर्मेशन निकाला है। कॉमर्स मैनेजमेंट में प्राइमरी तो होना ही चाहिए डेटा, लेकिन क्या वो रिसर्च आपका एनालिटिकल है, अप्लाइड है, एम्पिरिकल है, कॉजल है, ये जो बाकी के 4 चीजें होते हैं, इसको ज्यादा आपको फोकस करना, ठीक है। तो एनालिटिकल का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आपने उसमें स्टैटिस्टिकल पार्ट डाल दिए, ये XYZ स्टैटिस्टिकल टूलिंग डाल दी है, फिर आपका काम हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। एनालिटिकल का मतलब ये हो गया कि शुरू से जो फर्स्ट 50% आपका काम है, रिसर्च का काम है, मेथोडोलॉजी का जो काम होता है, उसमें आपने प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स करी है कि नहीं। So selection of your variable which is dependent and independent. Please remember, independent variable is the cause and dependent variable is the effect. तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा से आपके पास होना चाहिए, बेस्ड ऑन दैट आपका आगे का रिसर्च काम शुरू हो। ओके, तो सपोज मैंने पॉवर्टी लिया, पॉवर्टी एक मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, तो पॉवर्टी से रिलेटेड काफी डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, स्टारवेशन हो सकता है, नो मनी नो इनकम हो सकता है, सदियों से आ रही गरीबी हो सकता है, राइट। So there will be so many things which will come under the first 50% of research methodology. It is in every workshop I always keep telling the research scholars that अगर आप बोलते हो कि मैंने डॉक्टरल वर्क किया है, ये मेरा काम है, और इसमें अगर 80% आप खाली आपके स्टैटिस्टिकल वर्क को फ्लावर अप करके डेकोरेट करके आप बोल रहे हो तो देखिए मेरा काम बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। बिकॉज आपके पहले 50% जो RM होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, आपका रिसर्च डिजाइन होता है, ये आपके खुद का काम है। 50% तो कोई और आपके लिए कर रहा है। मैं गेटिंग यू, आपका स्टैटिस्टिकल पर्सन कोई और है जो आपके लिए डेटा वो लेके आ रहा है, लेकिन ये 50% जो है ये आपका खुद का काम है, जिसके लिए आपको आपके वेरिएबल्स पे काम करना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो क्या वेरिएबल आप सिलेक्ट कर रहे हो आपके काम के साथ, आपके थीम के साथ, वो आपको यहाँ पे आपके रीजनिंग में आना चाहिए, आपके रीजंस फॉर सिलेक्शन में आना चाहिए, एंड देन as you move on, you come up with a thematic approach for your research work, which is all based on theoretical resolutions and attached informations and so on. Like for example, जेरोम मैकार्दी ने अगर 4 मार्केटिंग पीस दिए, तो अभी हमने उसको बढ़ा के 7 कर दिया है, तो 7 के बारे में आप लिख रहे हो ना, किसी और ने वो दिया है आपको, ठीक है, जेरोम मैकार्दी ने लिया है। लेकिन इंडिया में ये 7 के अलावा क्या हम ऐसा भी मॉडल बना सकते हैं? कोविड-19 ने हमको बताया अभी कि हम ऐसा भी मॉडल कॉइन कर सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई beyond the 7 we still have different dimensions for marketing mix, because of which now the online structure of marketing is increased in double speed, right from the delivery channels, the supply chain, the logistics, the way the delivery boys come to your doorstep and give this to you, because the early times it was only McDonald's जो कॉइन किया कॉन्सेप्ट कि आप 30 मिनट में आपके घर में वो आ रहा है। इस चीज को अब हम नलीफाई कर रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे सभी ईटरीज के फूड कोर्ट आइटम्स है, फूड वाले जो चीजें हैं आपके डोर स्टेप पे आ रहे हैं। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन ही बदल रहा है अभी। तो क्यों नहीं हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ऐसा कुछ सोचेंगे जिसकी वजह से हम नए नए मॉडल्स बना पाएंगे, हम उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसमें मॉडल का जो कॉन्सेप्ट आइडिएशन है डोमेन थ्योरी से ही आना चाहिए, हमेशा से थ्योरी में से ही निकल के आना चाहिए वो, और आगे जाके वो एक प्रॉपर स्टडी बेस होना चाहिए जिसको सेमेंटिक रिलेशन बोलते हैं। 1 या 2 कॉन्सेप्ट को जोड़ के उसका रिलेशन आप कैसे बनाओगे और उस पर उस मॉडल पे आप कैसे काम करोगे, ये आपके डेटा कलेक्शन का एक पार्ट होना चाहिए। ओके, अभी कैसे करते हैं हम मैडम, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे।
या तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बोला था, अब मॉडल और मेथोडोलॉजी हम बाद में करेंगे, तो यहाँ से हम मॉडल के बारे में बात करेंगे। पहले आपको क्वांटिटेटिव एलिमेंट में हम मेजर करते हैं डेटा को, और सेकंड इसमें क्वालिटेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव? वी ऑल डू नो दैट इन आवर डोमेन एरिया ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, एनीथिंग दैट इज काउंटेड इन नंबर्स इज क्वांटिटी। Yeah, so primary data is a quantity. All of you agree with me, right? Because we are collecting information through surveys, through interviews, through face-to-face interaction, through questionnaires. Am I getting you? Through some observations part and all, like, and quantifying the data, the numbers that we are gathering, you are quantifying it, and then further we are going in for analysis. Am I right? So this is the way in which the quantitative element is being touched on, and then either way we call it as applied research or analytical research, or maybe we call it as empirical based, because empirical थोड़ा सा काफी अच्छा रिसर्च होता है, because इसमें आपका ऑब्जर्वेशन आता है, इसमें आपका इंटरप्रिटेशन आता है, इसमें आपका एक्सपेरिमेंट्स आता है, इसमें आपका इन्फ्लुएंसेस आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आप एक अम्ब्रेला में लेके आते हैं, जिसको हम क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स के साथ जोड़ सकते हैं। एंड क्वालिटेटिव एलिमेंट्स में जनरली वी डिनोट इट बाय टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक understanding, about a specific aim, about a specific problem, about a specific thing. Okay, so it is focused related. Okay, I'll give you a simple example, because normally qualitative log clinical psychology, sociology, humanities, इन subject के लोग करते हैं, OD, HR and all that, because इसमें span of the study थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? आपको observation करके information निकालना है, आपको experiments भी साथ ही साथ करने हैं। Okay, so I'll give you a simple example. This can also be done in a proper setup when you work on a special focus group. I'll give you a small case study. Say, for example, you can talk about NGO. Okay, and the NGO is doing a survey in a village. Yeah. Now, what survey they want to do? They want to actually conduct a cataract operation, eye operation camp. Okay. तो पहले तो वो सर्वे कर रहे हैं, तो पहला सर्वे में उन लोग ने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है। ओके, क्वांटिटेटिव मेथड, आप वो जा रहे हैं गांव के हर घर में और देख रहे कि भाई कहाँ कहाँ पे ऐसे कैटरेक्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो सर्वे में उनका एनालिसिस निकलता है कि भाई 50 लोग ऐसे हैं जिनको कैटरेक्ट ऑपरेशन की, कैटरेक्ट आई ऑपरेशन की जरूरत है, ठीक है। सो दे फ्लोट इन देयर कैंप एंड दे एक्सपेक्ट दैट as the survey is reporting that there are 50 cases, they expect that all the 50 will come for the operation on the day when they have decided. But what happens over here? Maybe 30 of them turn up and 20 don't turn up. 30 लोग आ रहे हैं लेकिन 20 लोग नहीं आ रहे, तो अभी वो क्या कर सकते हैं? क्या वो कैंप उखाड़ के खत्म हो गया काम उनका? नहीं, उनको अभी क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करना है। तो आप क्वालिटेटिव टेक्निक में क्या करेंगे? वो 20 फोकस ग्रुप है उनके लिए, वो 20 लोग उनके फोकस ग्रुप है, वो 20 लोगों के पास वो जाएंगे, उनके पास एक बैकग्राउंड होगा रीजंस का। तो बैकग्राउंड में या तो वो ऐसा बोल सकते हैं भाई ये एनजीओ है तो हमको ट्रस्ट नहीं है एनजीओ को, कल ऑपरेशन होता है और कंप्लीटली हमारा विजन चला जाए, तो ऐसा कारण भी हो सकता है। कोई ऐसा कारण हो सकता है कि भाई हम वैसे भी ओल्ड एज में कैटरेक्ट इज अ वेरी obvious matter, so it's okay, we don't want to get it operated. Okay, third case could be this way, that the person would say कि नहीं, it's okay, I'm not worried about what the issue is and therefore I just don't want to do it. So there will be n number of such reasons that the people would wish to give. So all you have to do is, like, you call it as a qualitative analytical research work, go to those focus groups, talk to them, get in their problems and then give them the solutions also. आप उनको conclude कर सकते हैं by giving them the solutions, giving them the advice, giving them the awareness. So qualitative, quantitative दोनों का मिश्रण करके भी कॉमर्स में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर केवल आपको क्वालिटेटिव पे ही जाना है तो ये एक्सपेरिमेंटल प्लस ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। थोड़ा रूटिंग उसका लंबा चला जाएगा, लेकिन आपका डेटा बहुत ही ऑथेंटिक होगा, आपका डेटा बहुत ही फुल प्रूफ होगा, बिकॉज आपको कंक्लूजन सीधा सीधा मिल रहा है। ओके, आप सब्जेक्टिव नहीं कंक्लूजन निकाल रहे, आप ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सो दीज आर some of the things that one should always look into it when it comes to qualitative and quantitative analysis. Both can be mixed up together and utilized for data collection work, wherein a person would be more correct in terms with knowing exactly
what are the probable issues or problems that will come up in the end while doing the research work. Okay, madam, next slide. Yeah, so these are the methodological aspects जो हम RM के बारे में बात कर रहे हैं. तो methodological aspects में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आजकल रिसर्च में मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अलाउड है यूजी के रूल्स के हिसाब से. तो कई लोग किसी डिफरेंट डायमेंशंस की चीज़ों को जोड़ के भी रिसर्च करते हैं. ठीक है, लाइक अगर आपको प्योरली सेकेंडरी बेस्ड कोई काम करना है तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल रिसर्च पे जोर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे पास्ट रिलेटेड डेटा ज़्यादा हम गैदर करते हैं और उस फैक्ट्स के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं. ओके, रेजोल्यूशन. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू डू रिसर्च ऑन एजुकेशन, राइट, so I may start getting the information right from the British times, maybe ancient times का भी ले सकते हैं आप, लेकिन बहुत बड़ा होगा इसलिए maybe I will go up to the British times. So from the British time, the East India Company के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए एजुकेशन लाया गया. तो एजुकेशन कैसे लाया, कौन सी प्राइम यूनिवर्सिटीज में आया वो, तो देश के 3 प्राइम यूनिवर्सिटीज थे, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई. तो यहाँ जब वो आए तो उन्होंने किस भाषा का उपयोग में लाया, तब इंग्लिश नहीं था तो संस्कृत था, उर्दू, फारसी भाषा थी. तो इन भाषाओं को कैसे उन्होंने अपहेल्ड किया, पुश किया, प्रमोट किया. तो ये सारा हिस्ट्री तो आपको मिल जाएगा अपने रिच बुक से, जहाँ से आप हिस्ट्री गैदर कर सकते हो. एंड देन इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद आप तकरीबन हर एक कमीशन, एजुकेशन कमीशन के रिपोर्ट्स को देखोगे. सो हंटर कमीशन से आप नीचे नीचे आओगे तो कोठारी कमीशन आता है, यशपाल का रिपोर्ट आता है. तो ये सब चीजें आप देखते 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 एंड में आप आओगे नए एनईपी पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. यानी ये कैसे अलग है, क्यों अलग है, क्या होने वाला है आगे जाके, उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. तो इस पे हम शुरुआत में एक छोटा पेपर बना सकते हैं. जैसे ही आपका पेपर बनता है आपको आइडिया मिलता है कि भाई इसमें स्कोप है आगे जाके रिसर्च करने के लिए या नहीं, राइट. सो दीज थिंग्स डू मैटर व्हेन यू लुक एट द historical aspect of research work, and then you move up to call it as descriptive observation. क्या बोल रहे हो आप, उस रिसर्च को क्या नाम देने वाले हो वो आप समझ सकते हो, and then appropriately you can use a methodology related to it. And as I said in the beginning, most of these studies in economics are more correlation based, because inflation studies or rupee price increase, deflation, appreciation of the rupee, or global trends related to export imports, trade related aspects, or sickness of some of the Indian companies in India, like the SSIs and so on. What are the root cause of it, like, you know, or maybe the agricultural agro industries issues, like your farmers and all, like the minimum production cost जो होता है हर चीज के पीछे, आप सेमी फिनिश्ड गुड्स भी ले लो, रॉ मटेरियल भी ले लो, या फिनिश्ड गुड्स भी ले लो. तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट्स में इनके चैलेंजेस क्या है, सिकनेस क्यों हो रहा है उनके इसमें. तो ये सब चीज़ आप कोरिलेट कर सकते हो, आप वेरिएबल्स लेके उनका कोरिलेशन रिलेशन डेवलप कर सकते हो. ओके, तो सिकनेस एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, these are correlated to each other. So what probable gaps are there that you can analyze well, right? So these things also can help us to come out with good research work that people can look forward to do it, and of course that then can be measured through statistical tools and techniques. जिसमें variation analysis, ANOVA का use होता है maximum time, chi-square होता है जिसमें आप reliability test करते हो just to see whether the variables are related to each other or not. Okay, then you use certain methods in which you want to check whether the dependent and the independent variables have a proper viability for accepting it or rejecting it. So you develop a hypothesis, right? And you create a hypothesis by making a relation or a disassociation. दो variables का association या disassociation आप निकालते हो और उसको statistically आप measure करते हो. ठीक है, ये सब चीजें फ्लो में आता है जैसे जैसे आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी बढ़ने लगता है, और हर एक चीज को आपको इम्पोर्टेंस देते आना चाहिए. आप किसी चीज को नलीफाई नहीं कर सकते. दूसरी बात आई विश टू से इज लाइक समहाउ इट्स वेरी what I don't know what to say, it's funny to see some research thesis where people have at least about 50-60 hypotheses on one parameter. तो
तो कई बार हमको चिढ़ भी आने लगती है कि भाई इसको इस पर्टिकुलर स्कॉलर को क्या समझ में आया कि ये हाइपोथेसिस को कैसे रिलेट करते, कैसे जोड़ते जा रहे हैं। जैसे अगर आपके रिसर्च में 2 पार्ट्स हैं तो ऐसे समय पे आप रिसर्च का एक यूनिट और उसका सब यूनिट हाइपोथेसिस में ला सकते हैं। तो जब सब यूनिट आपके बढ़ने लगते हैं, एक हाइपोथेसिस के पीछे आपके सब हाइपोथेसिस बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 up to that extent it can go. Similarly, the second variable also can move in the same order. Now this is possibly properly concluded only when you have only 4 to 5 objectives in your study. जब आपके ऑब्जेक्टिव्स ही इतने सारे हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स में वेरिएबल्स आपने इतने सारे लेके रखे, तो ऑब्वियसली आपके हाइपोथेसिस बढ़ने वाले। आपको एग्जैक्टली टाइटल में क्लैरिटी नहीं होगा तो ये सब चीजें बाद में आती है। इसीलिए it's much important that your title, your objective and your hypothesis should be connected to each other. They should move in a proper flow. Okay? And very perfect clarity should be there. एकदम crisp clarity उसमें होनी चाहिए कि आप क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? So we'll go to the next slide, please. Yeah. So this was just a summary of what it is. I very quickly resume it. Because the minute I said कि मैम जनरली कितनी हाइपोथेसिस होनी चाहिए रिसर्च में? नहीं we'll take it up in the end. Questions में लेंगे हम। तो पहले मुझे wind up करने दीजिए तो question answer। Okay मैम। So as I told you, some of the resolutions of research should be related to the first 50%. So first 50% should flow from the title. Okay. The title that you have selected should allow you to describe the purpose of your research, the scope of your research, magnitude of your research. That should allow you to come out with objectives. Objectives should be narrowed, very clear, and very perfect related to the theme and title. So 4 to 5 objectives should be very clearly given. Max to max 6 to 7. Okay, and hypothesis should also be connectively in the same order as the objectives are, and then the selection of your sample should be perfect. Okay, अभी आजकल नहीं, जो पुराने ज़माने से ही है रिसर्च में कि फॉर्मूला यूज करके हम लोग नॉर्मली सैम्पल को डिफाइन करते हैं। तो सैम्पल में आप कौन से टाइप के सैम्पल को कर रहे हो वो ध्यान में रखना चाहिए। आप ऐसे ही किसी सैम्पल को नाम नहीं दे सकते। लाइक फॉर एग्जांपल यूथ स्टडी कर रहे हो आप, तो यूथ को डिफाइन करो, पहले यूथ का एज डिफाइन करो। तो अगर आपने 18 से 23 डिफाइन किया यूथ को, तो ऑब्वियसली 18 to 23 is the defined youth age. Okay, so that will be called as strata. तो वो बनता है stratified study. आपने सीनियर सिटीजन्स को लिया है तो ऑब्वियसली वो एक बन गया स्ट्राटा। आपने एडल्ट को लिया तो वो एक बन गया स्ट्राटा। आपने जेंडर को लिया है, मेल फीमेल, वो एक बन गया स्ट्राटा। तो यू हैव टू कॉल इट एज अ स्ट्रैटिफाइड स्टडी। ओके, अगर आपने 500 एम्प्लॉयज किसी कंपनी के लिए या 5 कंपनी के लिए, 10 कंपनी के लिए, तो वो 500 अगर उसमें एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज, तो आप पूरे 1000 के पास नहीं जा रहे हो, आप 500 के पास जा रहे हो। आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हो ना, आप रैंडम जाओगे। तो आप रैंडम जा रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये रैंडम स्टडी है। तो टाइप ऑफ स्टडी में वो सैंपल की क्लैरिटी भी रखना बहुत जरूरी होता है। और साइज डिफाइन कीजिए फॉर्मूला से। एंड आई ऑलवेज एडवाइज दैट a buffer sample is always needed to be added. So your formula is going to give you about 376 to 386 as the standard size. Okay, always keep buffer of 25%, make it 500 or 500 plus. वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चनर हाफ फील्ड होते हैं, गलत फील्ड होते हैं, आपको क्लीनिंग करना पड़ता है क्वेश्चनर का डेटा, आपको एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है, आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ती है। और कई बार 350 अबाव वाले डेटा में एटलीस्ट अबाउट आपका 20-25% निकल जाता है क्लीन अप में, तो आपका डेटा सफर करता है। ओके, सो इट्स बेटर that you have buffer sample always in whatever kind of a work that you're going to do it, and then as you move further, the rest of the thing will be then very well complemented with the statistical part and so on. Okay, so I'm done with what I wanted to talk about with this PPT presentations, and now we'll open up for question answers. If at all anybody has questions, you can directly ask me. Yeah.
You can unmute and ask me the questions. मैम जनरली कितनी हाइपोथेसिस होनी चाहिए रिसर्च में? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके थीम टाइटल में आप क्या स्टडी करते हो उस पर बेस करेगा। ओके, अभी जैसे अभी मैंने बताया आपको स्टडी ऑफ यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो यूथ के आज के कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको पहले देखने पड़ेंगे। ऐसे तो यूथ का पहले से काफी प्रॉब्लम है, लेकिन आज क्या प्रॉब्लम, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम है, वो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, सोशो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द यूथ, तो आपने अगर आपकी एरिया जबलपुर से लिया तो जबलपुर तो बड़ा है ना, हाँ मैम। कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ना चाहिए, या 4 डिस्ट्रिक्ट आपने कलेक्ट कर लिए तो 4 डिस्ट्रिक्ट में यूनिट भी आपको देखना चाहिए कितने विलेजेस है, राइट। तो यूथ के क्या प्रॉब्लम्स है जबलपुर, तो आप डिफाइन कीजिए पहले। जैसे आपको यूथ के प्रॉब्लम समझ में आएंगे तो इसमें से आपको क्या लेना है, आपको 4 प्रॉब्लम्स लेने हैं, 5 प्रॉब्लम्स लेने हैं, तो 4 प्रॉब्लम से 4 वेरिएबल हो गए, 5 प्रॉब्लम नहीं तो 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल है तो 5 हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ओके मैम, ना? यस मैम, क्लियर। Anybody else? Yes, Neha madam, you can stop sharing. Any questions? Anybody else who asked any question? आपकी आवाज थोड़ी, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे सर, आप चैट बॉक्स में डालिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम, I have a question. Yes, please go ahead. Ma'am, what is the difference between objective of the study and hypothesis? Objectives of study and Hypothesis of the study. see, objectives is to study a particular problem. Okay, hypothesis is to develop a relationship or a disassociation of the problem. Objectives में आप clearly बोल रहे हैं कि मुझे ये study करना है, the problem of youth in India, the problem of challenges faced, the problem faced in education, the problem faced in unemployment, ये आपके problem की study हो गई। और जब आप उसको रिलेशन में लाते हैं तो वो हाइपोथेसिस में आप क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, लेस नंबर ऑफ जॉब्स, राइट। सो टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ जॉब एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन टेकन बाय द यूथ, तो ये दो चीजों का रिलेशन आपको लाना है या फिर उसको डिसएसोसिएट करना है। वो जो एजुकेशन ले रहे हैं और जिस एजुकेशन के बेस पे उनको जॉब चाहिए, इन दोनों में क्या समांतर है या असमानता है, वो आपको स्टडी हाइपोथेसिस में करनी होगी। Got it? Okay. Yes, ma'am. Thank you, madam. Austin, thank you. And let me clear that those who have been just cleared the DET examination from Rajendra Gautam Vidyalaya, Jabalpur, after the allotment of supervisors, they will take admission in G.S.College Research Center, and then we will continuously conduct the various classes of research coursework within 6 months. In that course curriculum, we will cover the objective of study, then hypothesis, and entire components of research methodology we will cover over there. So, Austin, you have just cleared first stage, and we hope that you will take your regular admission in G.S.College Research Center, and then we will give all this information about this particular topic which you have asked to Honorable Ma'am. Thank you, Austin, and thank you, Madam, also. Thank you, now I would like to Thanks invite Dr. Deshpande sir to please. You want to say something? Deshpande Yes, sir. Deshpande sir. यस सर, मैडम का हो गया सर क्लास पूरी? हाँ जी सर, क्लास हो गई है, क्वेश्चन आंसर राउंड में भी बच्चों ने पूछ लिया। अब आप क्या पावर सर, मैं डॉक्टर सुनील कुमार पावर सर से आग्रह करता हूं कि प्राचार्य जी उद्बोधित करें, आदरणीय सुनील कुमार पावर सर। देशपांडे जी, मैडम जी ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बाद शायद मेरे बोलने की अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, बट स्टिल because being the principal I have to otherwise also speak on my own topic, which is the last day on plagiarism. But nevertheless, I believe the students are very much satisfied with what she has said, and it was bilingual, so I think there's no issue at all.
Still, if some students have any doubts, they can come forward. Madam, we have been organizing such webinars, and I am one of those who met your Vice Chancellor one-to-one during my personal visit as member of the Autonomous Committee to two of your colleges there in Bombay. So definitely, I was very keen in meeting people of your department, but some or the other could not spare some time. I assure you that during our next meeting also, during our next webinars also, we'll invite you to join us for such academic purposes. I'm extremely thankful to you and the entire staff for cooperating with us, despite the fact, as we know, that we are not acquainted with one another. But when you were speaking about Govindaram Sexaria, G.S. College, which is prominently known as College of Commerce and Economics, let me tell you that our president was Sri Rahul Bajaj, and Govindaram Sexaria himself belonged to Bombay. His grandson, Sri Rajkumar Sexaria, is the owner of famous Cine Lab, Mumbai. So we are somehow or the other associated. During my visit to Bombay also, I met Mr. Rajkumar Sexaria. So we are very closely associated to Bombay. So I hope we will definitely join hands together for academic achievements. Thank you. Thank you very much, sir. It's my privilege to be connected to you all. So thank you very much to invite me. I'm very much happy to be part of this. And I'm very much happy to know that your college is organizing such events for the students and for the scholars, which itself is a big thing. Shortly we'll be having new students for our pre-PhD coursework. It's a 6 months coursework here. And our research center will be organizing that. So during that period, apart from physical presence, we will be organizing some webinars for taking advantage of all those experts who are around in every corner of the country. And definitely, we'll call you once again. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Shakti Pradhaman for vote of thanks. Ashishji, I think Shakti Madam is not there. There's some technical issue. You can continue. I would like to invite Dr. Sunil Deshpande, sir, to please put the vote of thanks for this session. थैंक यू आशीष सर 7 डेज नेशनल वर्कशॉप में आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप में हमारे बीच बॉम्बे विश्वविद्यालय से डॉक्टर संगीता पवार मैडम व्यस्त समय से निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुई। हम जीएस कॉलेज की ओर से डॉक्टर संगीता पवार मैडम का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमारे आदरणीय प्राचार्य जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ में सभी शोधार्थी जो लगातार 5 दिनों से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल हम पुनः 3 बजे रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, हाउ इज राइट द रिसर्च पेपर, हाउ राइट द थीसिस, इस 2 टॉपिक पर कल 2 सत्र है टेक्निकल सेशन, एक 3 to 3:45, दूसरा 3:45 to 4:30। कल 2 टेक्निकल सत्र है, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट अलग अलग है। कल हम पुनः 3 बजे मिलेंगे। मैं डॉक्टर पवार मैडम का पुनः थैंक्स करता हूं सभी कॉलेज की ओर से, अपने सभी शोधार्थियों की ओर से। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम लगी, हमारा पूरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, डॉक्टर प्रोफेसर अनुराग उपाध्याय जी, प्रवीण सिंह, जयंत रानाडे, नेहा पांडे, प्रतीक भाटिया, सचिन, आरवल, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जो जिनके बिना काम करना संभव नहीं है कंप्यूटर विभाग के बिना, तो सबका धन्यवाद। और मैडम को पुनः धन्यवाद। हम कल पुनः 3 बजे जुड़ेंगे। सभी से मेरा आगरा के समय से जुड़े, सभी टाइम से जुड़े थे, कल भी टाइम से जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you, Sunil Kumar, Principal Sir Ji. Thank you, Deshpande Sir. And थैंक यू आशीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you, sir. And officially, we are closing this session. Thank you, sir. Thank you, Honorable Ma'am. Thank you to all lovely participants. Thank you.